अच्छा भाई, अब हम बात करें मेरे बच्चे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के चैप्टर के ऊपर। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के चैप्टर में हम इसको दो तरीकों से रेफर करते हैं। टर्निंग इफेक्ट होता क्या है अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हो। मोमेंट का वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। और आप इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए टॉर्क का वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो ये दोनों ही मोमेंट यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को बताने के तरीके। यू आइदर राइट मोमेंट ऑफ अ फोर्स और यू राइट इट एज टॉर्क। टॉर्क का वर्ड थोड़ा कम यूज होता है पर मोमेंट ऑफ अ फोर्स का वर्ड जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। अब पहले बात तो ये समझने की जरूरत है कि भाई ये है क्या, व्हाट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स या व्हाट इज टॉर्क। हम जरा इसको पहले डिफाइन करते हैं, फिर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। तो अगर एग्जामिनर आपसे बोलेगा भाई डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स या डिफाइन टॉर्क, तो अब डिफाइन करते हैं भाई इट इज द प्रोडक्ट ऑफ force and perpendicular distance from the pivot to the line of force। इस डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं पहले उनके इंडिपेंडेंट मतलब समझा देता हूँ, फिर मैं एज अ होल मोमेंट की एक पिक्चर आपके जहन में क्रिएट करता हूँ कि मोमेंट होता क्या है और आप उसको कैसे फील करते हैं और कब फील करते हैं। सबसे पहले तो पिवट के वर्ड पे मैं आपको बता दूं भाई पिवट क्या चीज होती है। यहाँ पे मैं पिवट समझा देता हूँ पहले। पिवट मेरे बच्चे एक ऐसा ज्वाइंट बोला जाता है, इट्स एक्चुअली अ ज्वाइंट अबाउट विच a body can be rotated। एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट आप किसी चीज को रोटेट कर सके उसको पिवट बोलते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो डोर्स लगे हुए हैं, उन डोर्स के हिंजेस होते हैं। आप देखोगे तो हमारे डोर के हिंजेस होते हैं, ये हमारा एक समझ लीजिए। तो on the side of the door you've got these hinges, like 2-3 hinges on the door, जो कि हेल्प करते हैं आपकी डोर को रोटेट करने में। आप इन्हीं हिंजेस के अबाउट अपने डोर को ओपन करते हो और क्लोज करते हो। See? और अगर आपको याद हो कि भाई इफ यू हैव काइंड ऑफ लाइक अ सीसॉ, तो seesaws have got pivots in the middle। Pivot is actually about which a seesaw can actually rotate। So these hinges are basically pivots। See the joints about which the door actually rotates. Let me show you one more thing where you can find a hinge. If you have seen a nutcracker, see, if you have seen a nutcracker, then in a nutcracker, the point which is called F over here, the point which is called F over here is actually the pivot। The entire nutcracker actually opens and closes about it। So pivots are basically those places in your body where you create a joint and you can now rotate it about that। See, so any point about which rotation can be made is a, even your own joints are actually pivots। For instance,
let's say if I have let me show you a diagram of that too. Hmm. Hmm. Your arm has got pivots. See, your arm has got pivots. A lot of pivots actually, but this one सिर्फ एक ही दिखाई जा रहा है. See, this elbow joint of yours, this elbow joint is working as a pivot in most of the situations, in these situations, because you can rotate your arm about this elbow joint. So basically, pivot is a point about which rotation can take place. Actually, yes, our shoulder is also a pivot. See, it can also act as a pivot in most of the cases. This thing can also act as pivot. Even your wrist can act as pivot in both cases. You can rotate the wrist. Every joint is a pivot. Now this entire definition, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ. देखिए, जब आप बात करते हैं मोमेंट की, तो आपने डेफिनेशन तो लिख दी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ फोर्स. सही, लेकिन इसका मतलब क्या होता है और आप ये कैसे फील करते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूँ. इसकी एग्जांपल को समझने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपना बैग होल्ड कीजिए. तो if let's say, just giving you a simple example, if let's say this was you, say that's you, and you're holding your bag very close to you. So you're holding your bag close to you. Okay, and then I ask you to do the same thing. But let's say I ask you to do the same thing with your arms stretched wide out. Okay, you gotta do this. But right now you're supposed to do like this. You hold the bag in this position. See? So अब क्या होगा? In this position, it's easier for you to hold the bag. And again, in this position, it's now getting more difficult to hold the bag. Although the weight of the bag is same. Although the weight of the bag is exactly the same, but this time it appears heavier. Okay? The reason being, okay, when you stretch your arms out, now the weight of the bag is even trying to rotate your arms. This position, it was not trying to rotate much, but this position, the bag is trying to rotate your arm about your shoulders. So your shoulder joint was acting as a pivot. Joint pivot is basically a place where two things join and they can rotate from that position. So the weight is trying to rotate your arm. इस टर्निंग इफेक्ट को, इस रोटेशन के इफेक्ट को जो आप फील करते हो, इसको आप कहते हो मोमेंट. कि जब आप अपने आर्म को स्ट्रेच आउट करते हो, जब आप फोर्स पिवट से थोड़ा दूर लगाते हो, तो उसकी वजह से जब कोई चीज रोटेट करती है, उस रोटेशन के इफेक्ट को मोमेंट कहा जाता है. ये आप एक्सपीरियंस करते हो जब आप डोर पे फोर्स लगा के उसे बंद करने की कोशिश कर रहे होते हो, ये ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हो. ये आप एक्सपीरियंस करते हो जैसे मैंने आपको अपने बैग की एग्जांपल दी. कि आप अपना बैग आगे की तरफ स्ट्रेच आउट करके होल्ड करना चाहो, अब फील होता है बाकायदा.
यही आप फील करते हो अगर आप अपनी कार को लिफ्ट करने के लिए एक जैक का इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द लीवर, you're moving it up and down and you're trying to lift the car from one side. See, every time you even apply a turning effect of force when you try to open or close a cap of a bottle. Okay, what you're doing is your force is trying to rotate or turn something. Whenever the force tries to turn something, we say okay, it's now producing a turning effect, and we name the turning effect as moment. So to summarize it, I can say, hey, when a force tries to turn something about the pivot, the effect is called turning effect of force, or moment of force. So this is a basic idea. This is a basic idea of what moment actually is. कैलकुलेट करने की तो आगे ही कहानी है, कैलकुलेट करना हम सीख लेंगे. अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ यहाँ पे. अच्छा, your questions begin from here. Seesaw has a pivot in the middle of it. Yes, Zainab, it has a pivot in the middle. Swings have pivot at the top of the ropes. Bilkul. You mean pivots are just join things? हाँ, pivots are basically the places where you join two things. लेकिन ऐसा नहीं कि आपने वेल्ड कर दिया. अगर आपने उसको वेल्ड कर दिया तो फिर तो वो परमानेंटली ज्वाइन होगी ना, फिर तो वो रोटेट भी नहीं कर सकता. You need to give it an allowance to rotate. सही है. तो ऐसा ज्वाइन जिसके अबाउट रोटेशन हो सके उसको पिवट कहते हैं. Can our neck act as pivot? बिल्कुल. Your head can rotate about it. So what is the short meaning of dense? वो तो हर हो गया था, आपने जवाब दे दिया. So what is meant by perpendicular distance? अभी अभी है उसमें हम आएंगे. I haven't explained the perpendicular distance वाला concept yet. Does a pivot always keeps both sides balanced? नहीं. Pivot is just a joint बेटा. Both side balance करने के लिए तो हमें force apply करने की जरूरत पड़ती है. मेरे बच्चे, the problem is कि भाई when the bag was closed ना, it was only trying to pull your arms down. When the bag was further apart, it was not just pulling your arms down, it was actually producing a turning effect as well. दो चीजें हो रही थी. And now you have to balance them both. जब ऑब्जेक्ट क्लोज होता है तो इट्स इजियर. देखो ना, इट वाज इजियर फॉर द मैन टू होल्ड द बैग व्हेन द आर्म्स वर स्ट्रेच्ड आउट. नाउ इट्स मोर डिफिकल्ट. Sir, the pivots always produce turning. Pivots don't produce turning मेरे बच्चे. Pivots are merely joints. हाँ, अगर आप वैसे समझना चाहो तो बिल्कुल. Pivots will always trying to make things rotate. See, they allow they allow the bodies to actually rotate. ये कहना चाहिए. It's better. Ahmed, it's easier because when you hold it close, you don't get much of a turning effect. Your arms don't try to actually turn. Your arms only try to move down, and you can balance the force of the weight just by pulling it up. But when you have stretched your arms, now the bag is not just trying to move down, it's trying to make your arms turn. It's producing a greater effect. And hence you have got to apply more force in order to keep it in position.
नाउ फॉर द फॉर्मूला समझाने के लिए what I'm going to do is, let's imagine that I've got a rod. See, that rod is pivoted about this point. See, I'm going to call this place the pivot. It's a point about which the rod can rotate. And if I apply a force like this at the edge of the rod, in order to rotate it, given if force apply कर दी, and this is the length of the rod. That is the length of the rod, which you call the perpendicular distance. See, perpendicular का मतलब होता है making an angle of 90 degrees. Perpendicular का जो जनरल मतलब होता है it's making an angle of 90 degrees. तो ऐसा distance from the pivot जो आपके फोर्स के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा हो, सही, उस डिस्टेंस को आप बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर आपको फाइंड करना है मोमेंट, ये सिंबल है उसका, थोड़ा सा स्टाइलिश सा टी बना हुआ है. इसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये जो इन्वर्टेड टी बना रहा हूं ना मैं यहाँ पे, दिस इन्वर्टेड टी बेसिकली इज अ सिंबल फॉर परपेंडिकुलर, क्योंकि द वर्ड परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्रीज. एक ऐसा डिस्टेंस जो फोर्स के साथ 90 डिग्री बनाए. तो परपेंडिकुलर मींस 90. तो आप अपना मोमेंट निकालने के लिए फोर्स को ऐसे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे जो पिवट से लेके फोर्स तक का हो और 90 डिग्रीज का एंगल भी बनाता हो. और इसको ढूंढने का बड़ा आसान तरीका है. देखिए 90 डिग्रीज बनाने के लिए अगर फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल होना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ही हमेशा 90 डिग्रीज होते हैं. सही, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही हमेशा 90 डिग्रीज होते हैं. तो अगर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है किसी चीज, वर्टिकल फोर्स लग रही है किसी चीज में, तो उसका पिवट से डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल. और अगर किसी चीज पे फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल. आप बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखोगे कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ढूंढना होगा, 2-3 डिस्टेंसेस दिए हुए होंगे, तो उनमें से वो डिस्टेंस आप यूज कीजिएगा जो डिस्टेंस फोर्स के साथ 90 डिग्रीज का एंगल था. हर डिस्टेंस को यूज करके मोमेंट नहीं निकाला जाता. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं यहाँ पे. A distance that makes an angle of 90 degrees with the line of force. line of force का मतलब वो जो एरो मैंने बनाया है उसको मैं बोलूँ. line of force means that arrow that I've drawn. In this thing, this symbol is for the moment, and F is obviously the force. लेकिन let me tell you one thing बेटा, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ही गिवन, वर्टिकल फोर्स ही गिवन आपके पास. कभी कभार क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपको ट्विस्ट भी करेगा. फॉर एग्जांपल, ये जगह हमारी पिवट, we have got this pivot over here, and इस बार मैंने फोर्स थोड़ी डिफरेंट अप्लाई की. लेट्स से मैंने फोर्स अप्लाई कर दी इस तरीके से. सही. अब पेपर में आपको
क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा ना तो फोर्स की वैल्यू दी जाएगी। अब आपको चाहिए भाई इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक ऐसा डिस्टेंस जो इस फोर्स के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना। इस वक्त इसकी लेंथ तो हरगिज 90 डिग्री नहीं बना। पिछली बार तो ये हुआ था कि रॉड जितनी लॉन्ग थी उसकी लेंथ नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला मामला कर लिया था कि भाई जितनी लेंथ रॉड की वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया। इस बार ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसका एंगल 90 डिग्री नहीं था। ऐसे में एग्जामिनर क्या करता है आपको, he gives you multiple distances or he asks you to draw the perpendicular distance। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने फोर्स की लाइन को करना है एक्सटेंड। आपने फोर्स की लाइन को करना है एक्सटेंड। ये आप कर सकते हैं, यू कैन एक्सटेंड द लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स जस्ट टेल्स यू द डायरेक्शन कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। I'm going to make this line a dotted line just to let you know कि ये हमने सिर्फ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाई, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए बनाई। तो हमने फोर्स अप्लाई की and this is the line of force। Let me write it down over here। This is the line of force which is deliberately extended, and now if I want to make a perpendicular distance, I'll choose a distance which makes an angle of 90 degrees। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, this distance मेरे बच्चे is going to make an angle of 90 degrees with this force। This is going to be your perpendicular distance। अब पेपर में आप सोचेंगे सर हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, तो बेटा ये डिस्टेंस आपको गिवन किया गया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि आपसे पेपर में क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछता है तो वो किस तरीके से पूछेगा। लेट मी ओपन अप पेपर फॉर दिस वन। बिल्कुल ये देखो, बल्कि ये भी क्वेश्चन छोड़ो, लेट मी शो यू अनदर क्वेश्चन फर्स्ट। लुक एट दिस वन। If you look at this question, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर सेज कि a flat lamina is freely suspended from the pivot P। See, point P is your pivot। The weight of the lamina is 2 newtons and the center of mass is just बल्कि सेंटर ऑफ मास अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेट मी रिवर्ट बैक टू दैट सेम एग्जांपल, वो थोड़ी आपके लिए ज्यादा सिंपल हो जाएगी। तो भाई वो आपको एक क्वेश्चन देते हैं और देखो कितने उन्होंने चार चार डिस्टेंसेस आपको दे दिए। कहते हैं the length of a thread is attached to a lamina at point P। A lamina is free to rotate about point Q। Free to rotate about point Q का मतलब ये हुआ Q is the pivot। Q is the pivot। मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ भाई। The tension in the thread is F, मतलब आप F की फोर्स अप्लाई कर रहे हो पॉइंट P पे। What is the moment of F about point Q? मोमेंट निकालना है। अब मोमेंट निकालने के लिए हमने तो फॉर्मूला सीखा है भाई, मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो डिस्टेंस होता है ना जो फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना। अब क्वेश्चन में मुझे चार डिस्टेंसेस दिए गए हैं, मुझे देखना है इनमें से कौन सा डिस्टेंस मेरी फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल। और मैंने अभी एक बात कही थी कि भाई अगर फोर्स वर्टिकल होगी तो डिस्टेंस उसका हॉरिजॉन्टल होगा ताकि 90 डिग्री का एंगल बन सके, और अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका डिस्टेंस वर्टिकल होगा ताकि 90 डिग्री का एंगल बन सके। अब आप ये देखें कि जो फोर्स थी ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स थी। इस हॉरिजॉन्टल फोर्स का अगर मैं लाइन एफ एक्सटेंड कर दूं तो मैं क्या देखता हूं कि ये जो y आ रहा है पिवट से लेके इस फोर्स तक का, ये y है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो इस फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना सकता है।
इसके अलावा कोई सा डिस्टेंस आपके इस फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना, ना z, ना x, ना y, सबके आड़े टेढ़े एंगल्स बने. So it's only the force F which makes an angle of 90 degrees. See, which makes an angle of 90 degrees with the force. It's only this y. तो अगर मुझे टॉर्क की एक्सप्रेशन बनानी होती, फोर्स रखता मैं F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखता मैं y, और मेरे पास एक्सप्रेशन हो जाती F मल्टीप्लाई बाय y विच इज C. तो मैं इस तरीके से जवाब देता हूँ. समराइज करता हूँ मैं दोबारा इस बात को. मुझे बोलते हैं कि मोमेंट चाहिए मुझे F का अबाउट Q. Q पिवट है क्योंकि उसने लिख दिया था द बॉडी कैन रोटेट अबाउट पॉइंट Q. मोमेंट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला सीखा है कि भाई इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ फोर्स. नाउ दिस वाज द फोर्स जो कि यहां से शुरू हुई थी. मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था एक ऐसे डिस्टेंस के साथ जो आपके पिवट से लेके फोर्स तक का 90 डिग्री का एंगल बना सके. ऑप्शन दिए गए थे मुझे W, X, Y और Z. तो मैंने ड्रॉ करने के लिए क्या किया, अपने फोर्स को किया एक्सटेंड, उसकी लाइन को लंबा किया. इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं भी एक्सटेंड कर सकते डिपेंडिंग कि आपकी नीड क्या है. और फिर अब आप अपने पिवट से इस फोर्स तक का डिस्टेंस नोट कर सकते हो कि ऐसा डिस्टेंस जो पिवट से फोर्स तक का 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, वो डिस्टेंस होगा मोमेंट निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इस वक्त है y. बाकी और कोई डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं. इसको मैं आपके नोट्स में इंक्लूड भी कर देता हूँ ताकि बाद के रेफरेंस के लिए आपको ये चीज काम आ सके. उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेके लेसन एंड करता हूँ. अब मैं आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ यहाँ पे. हम्म 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 चलो. Certain effect of force is similar to centripetal force. Not exactly, slightly different होता है. सेंट्रीपिटल तो अंदर की तरफ पुल करती है ना, ये रोटेट करवाती है. हाँ, एक तरह से कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी रोटेशन को मेंटेन रखती है. सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द एंड ऑफ द पिवट टू द स्टार्ट ऑफ द पिवट. मेरे बच्चे पिवट के सेंटर से मेजर होता है, एंड और स्टार्ट का कुछ नहीं होता उसमें. एवरी टाइम द परपेंडिकुलर लाइन मेक्स 90 डिग्रीज, तभी तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं. परपेंडिकुलर मतलब ही इसका 90 डिग्री होता है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टिल द ऑब्जेक्ट, राइट. पिवट टिल द ऑब्जेक्ट नहीं होता. परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के लिए आप देखते हो डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू योर फोर्स. हेबा का क्वेश्चन इज इन वन ऑब्जेक्ट कैन देयर बी 3 or 4 perpendicular distances? नहीं, there is going to be one perpendicular distance only. So what that curve T is representing? That curve T is basically a symbol, मेरे बच्चे, for a perpendicular distance, for a moment. जैसे डेंसिटी का वो था ना स्टाइलिश वाला रॉ, इसी तरह इसका ये. नहीं आया, इट्स नॉट अ सिंबल फॉर पिवट बेटा, इट्स अ सिंबल फॉर द मोमेंट. मोमेंट का सिंबल होता है ये. The perpendicular also used in Pythagoras theorem. Yes, it is used for Pythagoras theorem. So can we make imaginary line? Bilkul, you can extend lines if you want. So how is this the distance of the rod? Mere bachche, you do not always have to take the distance of the rod as your perpendicular distance. Ye cheez to sikhani thi. It's not always the distance of the rod which is a perpendicular distance. It could be anything. It could be other than the distance of the rod too. Can we use angle concept here? No, mere bache, you don't need to apply sine, cos or tan. In O-level, you don't need that. By the best that you will be asked about will be Pythagoras theorem. तो उसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें डिस्टेंस आपको गिवन होंगे. Hassan, lamina is a fancy name for an irregular shaped object.
Alicia, I think we repeated the question twice or thrice, so maybe you would have got the question now. Ramin says, how do we know which is the pivot? Question के अंदर उन्होंने highlight, मैंने highlight भी किया था question के अंदर कि भाई free to rotate about point Q का मतलब ये था Q becomes your pivot. आप Q के about इसको rotate कर रहे थे ना? So can you show the slide above? I can show the slide above. This was the slide above. अच्छा. Whichever point the lamina is attached to is the pivot, which is in this case P. नहीं मेरे बच्चे बचिए. It was not P जहां से आपने pivot attach किया हुआ था. It was Q. Pivot पे तो force लगा रहे. P पे तो वो force लगा रहे थे. Q आपका pivot था इस question. How do you pronounce moment symbol? Moment का symbol pronounce होता है tau. TAU. अच्छा बजिए. आप मुझे कोई question भेजना. I don't think उसमें need पड़ती है. But give that MCQ, read once again, सही after the class, and मेरा जो lecture का part है उसको दोबारा सुनना, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका वो concept clear हो जाएगा. आपके वजह आपके टीचर ने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया होगा ये चीज, but I don't think you need to actually have the idea of sine, cos and tan in your O-level physics, even if IGCSE. ठीक है मेरे बच्चों, take care of yourselves, ख्याल रखना आप लोग.